Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who are not able to see positivity anywhere and within themselves. So if you are stuck with the negativity, then my channel is for you. It's your daily dose of positivity. Daily नहीं, week में 2 बार, एक बार तो है ही. But you can always watch my other YouTube videos to feel good about yourself and life. Uh, Today I want to talk about anger and how I always felt that if I'm angry, then rather than validating my own anger, rather than just allowing myself to be angry if I'm angry, I used to tell myself that I'm such a bad person because I'm angry. I am not a good person, rather than just sitting and allowing myself to be in the angry state and maybe writing about it or just not trying to fix it. Just I'm just angry. I don't want to hurt others. So I just want some time for myself, and I'll be in this state for 1, 2, or 3 days, or maybe for a week. And trust me, when you just allow yourself without fixing yourself, your body, your mind, your brain is gonna thank you. Trust me. It फेड्स अवे, इट जस्ट गोज, और उसका जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाता है. यू फील इट लेस बिकॉज नाउ यू आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स इट. क्योंकि हम क्या करते हैं ना, बिकॉज what used to happen to me that when I was small, I was kid, there was a lot of shame and punishment and silent treatment and making me feel that I'm not deserving of love when I used to show any kind of anger. Okay, and I was also told that I'm a bad person, I'm not good, I'm hurting others, and my anger is not right. And it's my fault, and I'm born like that. I'm causing troubles, I'm causing problem. They are ashamed of it. What people are thinking about me, what people are thinking about them because of me, because of my anger, rather than asking me that what is making me angry? What is upsetting me? Why am I so sad? Why am I so angry? Why am I so frustrated? What is bothering me? What is going on with me? Without rather than trying to know that I want to know what is happening with you. There has to be something which is causing you problem and sadness. That's why you are angry. Do you need something? Do you want to talk to someone or me? Is there something that I did which is bothering you and you are not able to tell me? Or is there something that you are going through with that you did not like, or there is something that happening in your life that you are not able to tell anybody or share with anybody? So I just realized it today that every time, like I am sharing with you all guys, that every time when I used to be angry, after that I used to feel bad. I used to feel ashamed of my anger. I used to feel that I'm not worthy and deserving of love. I'm a bad and the worst person who's hurting everyone, who's not good, who's rebellious, and who says whatever uh, comes in her mouth. And I'm such a horrible person. I'm a bad person, and I'm not deserving of happiness. I'm not deserving of love. I'm not deserving of friendship just because my anger was not validated. Then I sat today. I woke up around 9 or 10, and मेरा बेड से उठने का मन नहीं किया because the moment I woke up I was just feeling sad, extremely sad. And
I felt extremely lonely, and then I started to feel angry. And this time I told myself then that, you know what, I am gonna treat my anger as this person who's inside me who wants me to see her and ask her that what is going on with her, rather than trying to fix her and tell her then let's work on this, let's work on that, let me tell you this, be like this, be like that, do this, do that, be itna angry, be utna angry. I'm just gonna allow her to come to me and tell me why she's so hurt, why she's so angry, where I did not see her, where I did not value her, where I abandoned her, where I told her that she is not deserving of my attention, where she did not feel validated, seen, and heard. I will give her that. And today, when I allowed it, trust me, I felt कि मेरी बॉडी से ना कोई बर्डन हट गया है. When I allowed her, when I just allowed myself to be angry. I'm angry, I'm not gonna talk to anyone, I'm not gonna pick anybody's call, I'm not gonna reply to anybody's message. Okay, that's I still need to work on. But I'm not gonna tell myself today that I'm not deserving of all the abundance which is there in the universe just because I have this suppressed anger and I feel ashamed of this anger to just come out. So I was talking to my anger like she's my friend and a part of me, and she started to tell me that every time, like, I am sharing my story with you guys so that you can relate with it, and if you feel familiar and if the story feels relatable to you, you can also work on your anger too. Because क्या होता है ना कि most of the time we are on our spiritual journey and we start to think that anger is not good, any kind of emotion is not good. I have realized that I have done it for a very long period of my time to present myself as this person जिसे कोई गुस्सा ही नहीं आता. गुस्सा आना मतलब she is not deserving of love. गुस्सा आना मतलब I am at such a lower frequency. गुस्सा आना मतलब आई एम नॉट हीलिंग. गुस्सा आना मतलब आई एम नॉट एबल टू मैनिफेस्ट. आई विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन माई लाइफ, and universe will not bless me, and universe will not love me. I used to think all these things about my emotions and negative emotions also and anger also. But today I just told myself, you know what? Let me just allow myself to be angry. I will be angry. I am angry. My anger is angry. And I'm not gonna tell myself that, just let me just fix you, Priyanka. Let me just tell you, like, मेरा angry part यहाँ पे बैठा हुआ है. एंड मैं रादर देन उससे पूछने की बजाय कि वो एंग्री क्यों है, ऐसा क्या हुआ है उसके साथ, वो क्यों इतना इनवैलिडेटेड फील करती है, उसे क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करती. रादर देन ये सब बोलने के मैं उसे कह रही हूँ आई हैव दिस वर्कशॉप, आई हैव दिस प्लान, जस्ट डू इट सो दैट यू विल डील with your anger. Just deal with your anger. Just don't show me your anger. I don't like you. You make me feel bad about myself. So just go from here and fix yourself and then just come back to me. I don't want to listen to you. I don't want to hear anything from you. You just make me feel bad about myself. कैसा लग रहा है सुनने में? एक मेरा पार्ट है एंगर, लाइक मेरे दो पार्ट हैं, दोनों एंग्री हैं. एक है जो बहुत ज़्यादा एंग्री है, उसको बस ये चाहिए कि मान लीजिए एक पार्ट मेरा बहुत एंग्री है एंड दूसरा पार्ट है जो एंग्री है, लेकिन वो इसलिए भी एंग्री है क्योंकि मैं इस एंग्री पार्ट की सुन नहीं रही हूँ. ठीक है, उसको चाहिए कि मैं सुनूं, मैं समझूं उसे, ऐसा क्या है, मैं क्यों उसे अबैंडन करी हुई हूँ, क्यों मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है. रादर देन ये सब करने के मैं उसको फिक्स करना चाह रही हूँ.
Rather than just being there for my angry part, my abandoned parts, I'm trying to just fix myself. Let me just fix it. There is something wrong with my anger. There is something wrong with these two parts. So I started to ask her today, ki, I'm not gonna fix you. Today I really want to talk to you. Just tell me what is going on with you. Why you are so sad? Why you are hurting so much? Why do you feel this deep grief? Who hurt you? Who behaved wrongly with you? What happened to you? Where in my life I started to, blame you? Tell me, and trust me that abandoned part started to talk to me. And I started to recall all the memories, all the scenarios. Even if I will go to the sleep, it will come in my dreams, because I've started the process. I've started to ask that part. I've started to reconnect with that part. My subconscious mind is gonna show me. अगर मैं भूल गई हूँ तब भी मुझे वो दिख जाएगा, because now I'm trying to integrate that part कि I want to listen to you. Why do I feel that I am not deserving? Why do you feel that you are not deserving of love? Because you have this anger. What happened to you, due to which you have this anger? I want to go to that memory where something wrong happened to you. You felt angry. What was that? जो हुआ था, क्या हुआ था? I really want to know that. And I am there to understand you. I am there to validate you. I will take a stand for you. I will not tell you that you are the wrong person to be angry. Because if that happened to you, definitely that's why you are angry. Then you have all the right to be angry. Be angry, be upset, be sad. I am there for you. I will listen to you for as long as you want to. And then after that, when you feel that you are ready to listen to me, then we will work on it, on releasing it, because we don't want to be stuck here. We want to move forward also. But before, I want to be angry and I want to listen to you. I don't want to be angry. I want to listen to you. Because whatever happened to you, definitely something happened. That's why you are angry. And I want to go to the core of it. That what triggered you? Why you feel so abandoned? Why you feel isolated? Why you feel as if I don't love you? Why you feel that you are not deserving of my love? You are a part of me, and definitely there is something that I am not listening. And today I will listen to you and tell me everything. I'm here and I will listen to you. So, even when I'm shooting this video right now, recording this video right now, I feel I'm talking to that part. And just by allowing that part to, talk back to me without any judgment. Most of the time what happens ki we want the entire world to not be judgmental towards our emotion. Jabki in reality, what happens that we are the one who are judging our own emotions. Like, I used to be the kind of person, I'm still working on it through this video and through my work. I used to judge myself for my anger, because when I was a child, whenever I used to be angry, I used to be punished for it. I was shamed for it. I was given the silent treatment, and I was told that I am a shame and nobody will love me, nobody will talk to me, and I bring shame to this family. People talk badly about them because of me. It's all because of me, rather than asking me that what bothered me, what happened you because of what happened, what is the reason of your anger. I want to listen to you. They told me this story, and I started to see myself
as the lens of my parents. Of course we do that ना, we see ourselves through the lens of our parents. एंड हमारा जो इनर क्रिटिक होता है, हमारा जो इनर डायलॉग होता है, भले ही हम उनसे दूर रहने लगे, हम थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, वो स्टोरी हमारे माइंड में सेम ही चलती है. सेम एफर्मेशंस हमारे माइंड में चलता है खुद को लेकर. एंड उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए आपको रीपेरेंटिंग करनी पड़ेगी. आपको अपना पेरेंट बनना पड़ेगा और आपको वो सारे एफर्मेशंस, नैरेटिव्स चेंज करने पड़ेंगे खुद के लिए. आपको खुद से ऐसे बात करना पड़ेगा जैसे कि आप किसी और बच्चे से बात कर रहे हैं, आप खुद के बच्चे से बात कर रहे हैं. या फिर आपके सामने अगर कोई 5 साल का, 3 साल का बच्चा है, वो अगर उस सेम सिचुएशन में है जैसा आप अभी फील कर रहे हैं, तो आप उसको क्या समझाएंगे? आप उससे कैसे बात करेंगे? अगर वो रो रहा है, अगर उसको गुस्सा आ रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? चुप हो जाओ, मत रो, तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी वजह से लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, तुम्हारी वजह से लोग मुझसे रिलेशन नहीं रख रहे हैं, तुम्हारे रोने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मेरे काम के लिए लेट हो रहा है. क्या आप उसे ऐसे बोलेंगे? तो अगर आपसे ये सेम चीज़ बोली गई जब आप छोटे थे, तो क्या ये सही था? तो यहाँ पे रीपेरेंटिंग करना पड़ता है. जैसे कि आप उस छोटे बच्चे से बात करेंगे ना, वैसे आप खुद से बात करिए, आप अपने उस पार्ट से बात करिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उस छोटे बच्चे से बात करेंगे. और आप उसको बिल्कुल वैसे ही प्रोटेक्ट करिए जैसे आप उस छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे. आप उसके लिए बिल्कुल वैसे ही स्टैंड लीजिए जैसे आप उस छोटे बच्चे के लिए स्टैंड लेंगे. दिस थिंग एक्चुअली मेड इट ईजियर फॉर मी. इफ एनीथिंग इज, अगर मुझे कुछ भी फील हो रहा है, तो आई विल टॉक टू माई सेल्फ like a parent, but I will see that part of me as a child, as a small version of myself who's trying to tell me something. And I will observe, am I resistant towards this? I am being critical towards this. I am abandoning this. Am I neglecting this? Am I angry on this part? And I will observe कि क्या मेरा इन दोनों के बीच में, क्या एम आई बीइंग नाइस टू हर, एम आई बीइंग अंडरस्टैंडिंग टू हर, एम आई ट्राइंग टू नो हर, वैलिडेट हर, और एम आई क्रिटिसाइजिंग हर? what am I doing? And if I am being critical towards her, then why am I being critical towards her? Why there is a need for her to be perfect? Why I want to suppress her? Why am I abandoning her? Why I think that by accepting her, why do I feel that by accepting her, I'll be in some kind of trouble, or I feel shame, or I feel scared? And if I feel scared, then what this other fear part is trying to tell me? Why this part, now again, why this part of me thinks that by accepting this part, मतलब आप समझ रहे हैं, I'm gonna abandon this part. So now I have to listen to both of my parts. Okay, you want my acceptance. You want me to not accept this part. You want me to not listen to this part. You want me to just listen to you, which is fear. Okay, now first I will deal with you. You have fear. Why do you, rather than being angry at this part, why do you feel that by accepting this part I'm gonna abandon you, or you will be unsafe, you will not be loved? What is this fear trying to tell me? Why you are holding on to this fear? What will happen if I accept this part? So you have to deal with your different parts, because कभी-कभी क्या होता है ना कि even if you want to accept it, आपको कोई दूसरा shadow self बाहर आ जाता है जो इस पार्ट को लेके बिल्कुल रेजिस्टेंस में होता है,
भले ही आप कितना भी इस पार्ट को इंटीग्रेट करना चाहो ना, ये पार्ट रेजिस्टेंस में ही होगा. जैसे ही आप इसको पास लाना स्टार्ट करोगे, ये आपको शेमफुल, फियरफुल, गिल्टी एंड बैड फील कराना स्टार्ट कर देगा. तो आपको भागना नहीं है इससे भी, इसको भी चाइल्ड की तरह ट्रीट करना है. इससे भी पूछना है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लेती हूँ तो वाई डू यू फील दैट यू आर नॉट सेफ, or you will not be loved. Why you are scared that if I accept this part, then what will happen to me, what will happen to you, what happened to you, what scenarios you are still replaying in my mind, you are still holding on to. What happened? Tell me. Trust me, by doing this practice now, things will become easier for you. Because मेरे लिए चीज़ें ईजी हुई हैं. बस बैठ के स्पिरिचुअल बाईपास करने से, इमोशनल को एस्केप करने से, इमोशंस को एस्केप करने से ना कुछ नहीं होता. यू विल एक्चुअली हैव टू सिट विद योर इमोशंस एंड यू हैव टू सी, ऑब्जर्व एंड फील कि भले अच्छा मैं एंगर फील कर रही हूँ, देन आई हैव दिस पार्ट ऑल्सो जो इस एंगर को एक्सेप्ट करने के रेजिस्टेंस में है. क्यों है ये रेजिस्टेंस में? आपको दोनों पार्ट को सुनना पड़ेगा. विदाउट इंटीग्रेटिंग बोथ योर पार्ट्स यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है? आप गुस्सा करना चाहते हो, गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हो, आप इसको इसको लेके बिल्कुल ही इस पार्ट को आपने बिल्कुल ही अबैंडन किया हुआ है. नाउ यू आर अवेयर कि यू वांट टू इंटीग्रेट इट, बट देन दिस पार्ट इज कमिंग. दिस पार्ट इज टेलिंग यू दैट आई डोंट वांट दिस पार्ट, बिकॉज इफ यू विल एक्सेप्ट दिस पार्ट दिस विल हैपन. देन व्हाट विल हैपन? यू विल हैव टू टॉक टू दिस पार्ट. व्हाट विल हैपन? ओके, what you are scared that you will lose. So what worst can happen, and what you are getting by not accepting this part, what best you are getting by not accepting this part. So these are the questions you need to ask yourself, because I ask myself every day about money also. That this I learned actually from someone, to ask these two questions, that how am I benefiting from attracting and making less money in my life? What best is happening in my life by attracting and having less money in my life? And what worse can happen if I start to make more money in my life? Because इवन दो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, बट डीप डाउन जो मेरी कंडीशनिंग है, मनी इज़ नॉट सेफ, मनी इज़ नॉट गुड, पीपल आर गोना abandon me if I get rich. I'll lose connection, I'll lose friends, people are gonna come after me, I'll have fake friends, I'll have fake connections, I have no love. Money means sadness, money means betrayal, money means no good connections, money means people backstabbing you, money means hollow connection, no meaningful connection, money means no love in my life. So all these conditionings are inside me. Now मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ I love money, I want money, I need money, 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 money. क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा. उससे एक्चुअली बर्ड आई है, आई लव दैट. सो उससे कुछ नहीं होगा जब तक मैं अपने उन कंडीशनिंग को नहीं सुनूंगी जो ये सब चीज़ें कह रही हैं कि मनी इज, इफ आई अलाउ माई सेल्फ टू मेक मनी, ऑल दीज थिंग्स विल हैपन. आई हैव टू आस्क दिस पार्ट कि ओके, व्हाई डू यू फील दैट ऑल दीज थिंग्स विल हैपन? Okay, and until and unless you will not ask yourself these tough questions, what worse can happen if you start to make more money? You will not have the answers. And when you will have the answers ना, trust me, आपको हंसी आएगी सुन के कि भले आप मुझे कह रहे हो मुझे तो मनी चाहिए, लेकिन अब मैं मेरी कंडीशनिंग तो ये सब है,
तो इसीलिए मैं मनी को सबोटाज कर रही हूँ, इसीलिए मैं मनी से दूर भाग रही हूँ, इसलिए जब मेरे पास मनी नहीं होता तो मुझे बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है। मे बी मुझे विक्टिम जोन में रहना अच्छा लगता है, मुझे मुझे लगता है कि अगर मैंने खुद को लेके रोना बंद कर दिया, हेल्प मांगना बंद कर दिया, अगर मैं इस पावरफुल पोजीशन पे आ गई, अगर मैं इस पावर और अथॉरिटी पे आ गई, तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ही ये है कि मैं रोती रहती हूँ, मैं हेल्प मांगती रहती हूँ, मैं बेचारी फील करती रहती हूँ। अगर मैंने इस आइडेंटिटी को छोड़ दिया तो आई विल बी अलोन इन माई लाइफ, आई विल नॉट एग्जिस्ट। Fear that I will not exist, then what? Then no matter कितना भी आप affirmations बोल लो, you will end up repelling money, and I am working on it. I ask myself these two questions every day and I get very funny answers because I know I am subconsciously or somehow repelling money, but I want to work on it now. And for that, I need to listen to my limiting beliefs and observe them and allow them to come and feel them, and then just tell them, Aram se, this is not gonna happen this time. You will have new friends, you will still exist, new people are gonna come, nobody is gonna betray you, nobody is gonna abandon you. You will find people who will love you deeply. Okay? मनी को लाइफ में अगर तुम आने दोगी तो ये सब नहीं होगा. एंड आई नो कि जब मैं ये सब चीज़ कह रही हूँ तो मोस्ट ऑफ यू आर गोना थिंक कि क्या बोल रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट ऐसा होता है. ओके, मैं अलग ही टॉपिक पे चली गई बिल्कुल. लेट्स कम बैक टू दिस एंगर वाला टॉपिक. सो इसमें भी सेम है. आप खुद से पूछिए, how am I benefiting by not allowing myself to accept my anger, and what worse can happen if I accept my anger, what my anger is here to teach me, what my anger is here to tell me. Because trust me, anger is not bad. लोगों ने, सोसाइटी ने ना एंगर को बहुत ही बिल्कुल शेम की कैटेगरी में डाल दिया है. एंड वो अपने एंगर को इंटीग्रेट नहीं करते, अपने एंगर की सुनते नहीं, अपने एंगर से सीखते नहीं, अपने एंगर से बात नहीं करते, और वो अपने एंगर को सप्रेस करते हैं. एंड देन वो दूसरों के एंगर को शेम करते हैं, अपने भी एंगर को शेम करते हैं. रादर देन करना ये चाहिए कि वी ऑल नीड टू सिट विद आवरसेल्व्स एंड आस्क आवरसेल्व्स कि ओके, आई हैव द एक्सट्रीम रेज इनसाइड ऑफ मी, आई हैव दिस एंगर, व्हाट दिस एंगर इज हियर टू टीच मी, हाउ दिस एंगर कैन heal me, help me heal, how this anger can help me rise. And anger will tell you. Anger is there because something definitely happened. Or maybe you perceived something in a different way. And also if you perceived something in a different way, उसके पीछे भी रीज़न है कि आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई है कि आप उस चीज़ को वैसे ही परसीव कर रहे हैं. एंड वो चीज़ बार बार ट्रिगर होती रहेगी जब तक आप उसको खोल के ना देखें. बुक इज़ लाइक, मुझे खोलो, मुझे खोलो, मुझे खोलो, एंड वो बार बार आपको नॉक कर रही है, आप खोल ही नहीं रहे, आप खोल ही नहीं रहे, आप बोल रहे हो मेरे सामने तो बुक ही नहीं है, ये तो बुक है, ये तो मेरे सामने बुक हो ही नहीं सकती. बुक आपके सामने पड़ी हुई है, वो आपको बार बार नॉक कर रही है, आपने आंखें बंद की हुई है, मेरे सामने बुक नहीं है, मेरे सामने बुक नहीं है, मेरे सामने बुक नहीं है, एंड यू आर फील अशेम्ड कि मेरे सामने बुक है, जबकि वो आपके सामने है, जबकि आपको शेमफुल फील नहीं करना चाहिए. फिर बुक ने एक दिन नॉक करते करते आपके सर पे मारा, एंड यू आर लाइक व्हाट इज दिस, क्या हो गया. देन लाइक कोई बड़ी चीज़ हो गई आपकी लाइफ में कि आपसे वो अब हैंडल ही नहीं हुआ कि मेरे सामने बुक नहीं है, ये सोचना. देन आपने वो बुक खोल ही दी, फिर आपको जाके पता चला अच्छा
इसीलिए मेरे सामने ये बुक थी और इसीलिए मैं इसको नहीं खोल रही थी, ओके मैं इससे डर रही थी। लेकिन जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर लोगे ना, तब तक वो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। एंड ट्रस्ट मी, एंगर इज़ नॉट बैड। Just allow yourself to be angry, and after that time ask yourself that what is underneath that anger, what is inside that rage and anger. On this note, I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye and take care. And if you like my content, then do share and subscribe and comment down below, and I will see you all in my next video. Bye.